Computer networking. In this video tutorial, we are going to learn and discuss about network, what is networking, network device, IP address, what are the types of network and characteristics of a network. So let's start. What is a computer network? A network is a group of two or more computers or other electronic devices that are interconnected for the purpose of exchanging data and sharing resources. For example, printers. जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, वो शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को एंड किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को, तो उसे नेटवर्क कहा जाता है. इंटरनेट इज़ द एग्जांपल ऑफ नेटवर्क विच कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. Another example of network is Wi-Fi at your home. The wireless local area network, that is Wi-Fi network, in your home is a good example of a small client-server network. Various devices in your home are wirelessly connected to the router, which acts as a central device. The router itself is connected to a much larger network, which is Internet. Internet and Wi-Fi network are the examples of network. Wi-Fi is a facility allowing computers, smartphones or other devices to connect to the internet or communicate with one another wirelessly within a particular area. Wi-Fi uses radio waves to transmit data from your wireless router to your Wi-Fi enabled device like your smartphone, your tablet, your computer or smart TV. जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो सबसे कॉमन एग्जांपल हमें नज़र आती है इंटरनेट एंड वाईफाई नेटवर्क जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं. वायरलेस नेटवर्क के अंदर एक ISP राउटर के साथ हम अपने घर में तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं लाइक लैपटॉप, डिजिटल कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स. ये सब डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं एक डिवाइस के साथ जिसे ISP राउटर कहा जाता है. इस तरह नेटवर्क के अंदर हम बहुत सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं और वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं. इसको हम नेटवर्क कहते हैं. व्हाट इज़ नेटवर्किंग? Establishment or use of a computer network is called networking. It is the practice of transporting and exchanging data between two devices over a shared medium, whether wireless or wired. जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस एक नेटवर्क के अंदर डेटा एक्सचेंज करते हैं, फाइल्स को शेयर करते हैं, उसे नेटवर्किंग कहा जाता है. Wi-Fi at home is a best example of wireless network. हमारे घर में जो वाईफाई हम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हमारे सारे कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइसेस राउटर के साथ कनेक्ट होते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं वायरलेसली, इसको नेटवर्किंग कहा जाता है. व्हाट इज़ द नेटवर्क डिवाइस? द नेटवर्क डिवाइस इज़ वन काइंड ऑफ डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस और कंप्यूटर्स टुगेदर टू ट्रांसफर रिसोर्सेज और फाइल्स लाइक फैक्स मशीन्स, प्रिंटर्स और राउटर्स. नेटवर्क डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, उसे हम नेटवर्क डिवाइस कहते हैं. What are the examples of network devices? Examples of network devices are switch, hub, bridge, router, modem, repeater and gateway. The most common network device is at our home, that is router. We call it router or ISP router. हमारे घर में जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो मोस्ट कॉमन नेटवर्क डिवाइस ISP राउटर हमें नज़र आता है. इस नेटवर्क डिवाइस के थ्रू हम कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स को कनेक्ट करते हैं एंड देन आपस में कम्युनिकेट करते हैं. What is the meaning of device IP or IP address? Internet Protocol address is a unique address for computing devices like PCs, smartphones and tablets to recognize itself as well as communicate with various devices within the network. किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो उन सब डिवाइसेस को एक यूनिक नंबर अलॉट किया जाता है. उस यूनिक नंबर को हम इंटरनेट प्रोटोकॉल या IP एड्रेस कहते हैं. IP address is divided into two parts. The first three digits are called network ID and the last digit is called host ID. For instance, हम अपने घर में वायरलेस नेटवर्क के साथ 4 डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं तो ISP राउटर उन 4 डिवाइसेस को एक यूनिक नंबर अलॉट करेगा जिसमें फर्स्ट 3 digits will remain same and the last digit will change. स्क्रीन पर पिक्चर के अंदर एक एग्जांपल दी गई है जिसमें राउटर के साथ 4 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन. इन सब डिवाइसेस को राउटर ने एक यूनिक ID अलॉट की है जिसके थ्रू वो उन्हें आइडेंटिफाई करता है. ISP राउटर इन IDs के थ्रू पर्टिकुलर डिवाइस को रिकॉग्नाइज करता है.
एंड ये डिवाइसेस इस आईडी के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। Networks are usually divided into different types according to transmission type and range. Network के types को 2 categories में divide किया गया है, according to their transmission type and according to their range. In transmission type, networks are classified by transmission as either wireless or wired. Examples of wireless networks include Wi-Fi networks based on the IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers standard, or the LTE long-term evolution networks used for the mobile devices and smartphones. Wired networks such as DSL digital subscriber line are also known as broadband internet. Types of network में ट्रांसमिशन टाइप कैटेगरी के अंदर नेटवर्क को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, whether wired or wireless. According to transmission type, networks are further classified into wired or wireless networks. Wireless network के अंदर IEEE standards और LTE standards यूज होते हैं, जबकि वायर्ड नेटवर्क्स के अंदर DSL यूज़ होती है। जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करेंगे तो हम अकॉर्डिंग टू देयर ट्रांसमिशन टाइप उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे कि वो वायरलेस नेटवर्क है या वायर्ड नेटवर्क है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क अकॉर्डिंग टू नेटवर्क रेंज। नेटवर्क्स आर टिपिकली क्लासिफाइड बाय रेंज एज फॉलोज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स अकॉर्डिंग टू देयर रेंज: पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, metropolitan area network, and wide area network. Personal area network is used for interconnecting devices with a short range, approximately 10 meters. The best example of personal area network is Bluetooth technology. सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला नेटवर्क टाइप लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसे हम घर में या ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम 2 सिटीज़ को इंटरकनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। These types of networks cover cities or single geographic regions. हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को 2 सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। फोर्थ टाइप इज़ वाइड एरिया नेटवर्क. The best known example of a global network is Internet. We also call it GAN, Global Area Network. Internet is a common example of wide area network. These are the 4 types of network according to their range, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क है। Characteristics of a computer network. There are various characteristics of a computer network, but top 6 are mentioned here. The very first one is sharing resources. Sharing resources from one computer to another computer over a network. कंप्यूटर की बहुत सारी खुसूसियात हैं, जिनमें नंबर 1 शेयरिंग रिसोर्सेज हैं। शेयरिंग रिसोर्सेज का मतलब हम किसी भी नेटवर्क के अंदर किसी एक डिवाइस को लाइक प्रिंटर उसको यूज़ कर सकते हैं ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स। मल्टीपल कंप्यूटर्स कैन यूज़ द प्रिंटर एट द सेम टाइम। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज इट्स परफॉर्मेंस। किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क की परफॉर्मेंस उसके नंबर ऑफ़ यूज़र्स को रिस्पॉन्ड करने से मेजर की जाती है, कि उसके नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं उस नेटवर्क में, उस नेटवर्क के अंदर उसके नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं, एंड द नेटवर्क उन्हें किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। थर्ड वन इज़ रिलायबिलिटी। मेक्स ईजी टू यूज़ एन अल्टरनेटिव सोर्स फॉर डेटा कम्युनिकेशन इन केस हार्डवेयर फेलियर और कनेक्टिविटी इश्यूज़। नेटवर्क के अंदर रिलायबिलिटी एक मेन फीचर है। स्केलेबिलिटी, विच इंक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस बाय एडिंग मोर प्रोसेसर्स। हमारे सिस्टम को स्केलेबल बनाने के लिए हम अपने नेटवर्क के अंदर फर्दर मोर प्रोसेसर्स को भी ऐड कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज सिक्योरिटी. Security is the main characteristic of a computer network, that you can take necessary steps for protecting your data from unauthorized access. किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। Number 6 is data fault tolerance. Fault tolerance is another fantastic feature offered by computer networks. Fault tolerance का मतलब होता है किसी भी किस्म के फेलियर को रिस्पॉन्ड करना या उसे हैंडल करना। कंप्यूटर नेटवर्क की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में से इन 6 को हमने डिस्कस किया है। That's all about computer networking. Well, that's all about this tutorial. I'll see you next. Thank you.